About today. Enum is a type field where you can store more than one value. Okay, you can store more than one value, but having different data type. Okay. Okay. So enum is a type field which store more than one value. Okay, which store more than one value, but having a different data type. It can store the more than one value in a single memory location. Okay, and it act as a array, but it different from array. Array is saying that at the same time you can store only the same type of value, but in the enum you can store the different type of value. So that is the difference between the array and enum. The enum provide some kind of predefined method. Through this method you can access the value. Okay, so it is provide some kind of predefined method. So by using of method, मतलब उसके अंदर कुछ predefined method है, वो method को use करके आप enum का जो सारा element है आप इसको retrieve कर सकते हो. As enum comes under java.lang package. java.lang पैकेज एक ऐसा डिफॉल्ट पैकेज है, तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रोग्राम लिखते हो वो पैकेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. तो enum जब आप रन करोगे तो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और कोई एक्स्ट्रा पैकेज आपको यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. ऑटोमेटिक कंपाइलर और ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम में आपका ऐड हो जाएगा. ओके, सो सी दैट हाउ यू हैव टू डिफाइन दिस enum. See that enum type consists of fixed set of constant. मतलब enum एक type field है. It is a class type, but it is a type field where it contain more than one value. तो यहाँ पर एक enum मैंने डिफाइन किया. पब्लिक enum का नाम हो गया डे. उसके अंदर में वैल्यू यहाँ पर पास किया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो ये सब एक वैल्यू है. तो कहाँ पर स्टोर हुआ ना enum में. enum क्लास बॉडी कैन इंक्लूड द मेथड एंड अदर फील्ड. ये enum बॉडी के अंदर बहुत सारा मेथड रहता है. इस मेथड को यूज करके हम enum से वैल्यू रिट्राइव कर सकते हैं. द कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेशल मेथड व्हेन इट क्रिएट द enum. तो कंपाइलर ऑटोमेटिक कुछ मेथड enum में ऐड कर देता है. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, वो मेथड को यूज करके आप सारा इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हो. एंड दिस enum comes under the package. The package name is java.lang.enum. Since Java doesn't support multiple inheritance, enum cannot extend from any else.
Okay, so now I show you some example of enum, then the concept is clear for you. I just show you some example of enum. By defining a enum name is operating system. Then here we define Windows, Unix, Linux, and Macintosh. So these are called as the word enum value. Enum name is operating system. Enum value is Windows, Unix, Linux, Macintosh. It is defined outside of the class. Now, for accessing the element from the enum, first of all, we have to create a object of enum. Enum का नाम है operating system. Now we are creating a object as OS. Another object we have created here, operating system is a enum name, then OSS array. ऑब्जेक्ट को मैं array में इसको कन्वर्ट कर दिया. तो जब मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वैल्यूज मेथड, तो enum का जो सारा वैल्यू है वो सब आकर OSS array में स्टोर हो जाएगा. आज इट इज ए array, तो array से सारा एलिमेंट को रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे एनहांस फॉर लूप. तो फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम ए कोलोन OSS, तो OSS इज ए array से सारा वैल्यू आकर ए में स्टोर हो जाएगा. तो जब मैं प्रिंट करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, तो enum में जो सारा वैल्यू है ये आपको डिस्प्ले करेगा. तो यहाँ पर पहले से मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया OS इक्वल्स टू enum का नाम है यहाँ पर डिफाइन किया डॉट वैल्यू ऑफ एक मेथड है. वैल्यू ऑफ में मैं एक पैरामीटर वैल्यू यहाँ पर पास किया, विंडोज पास किया. अगर ये वैल्यू enum का लिस्ट में प्रेजेंट है तो आपको रिटर्न करेगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इज विंडोज. अगर ये वैल्यू आपका ये लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, सपोज मैं यहाँ पर विंडोज डालूंगा, तो यहाँ पर इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन शो करेगा, रन टाइम एक्सेप्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर विंडो जो है विंडो enum के अंदर नहीं है. सो इट इज शोज एन एक्सेप्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रन दिस प्रोग्राम एंड शो यू द आउटपुट. इट इज शोइंग यू विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड मैसिंटो. तो यहाँ पर जो मैं विंडोज पास किया तो विंडोज यहाँ पर मैच हो गया. तो यहाँ पर दिखाया योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज. तो यहाँ पर फिर
और एक चीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, विंडोज के जगह पर अगर मैं विंडो लिख देता हूँ, so window is not present in the list, so what it will display? Let me compile it. See there. First of all, it is show all the output Windows, Unix, Linux, and Macintosh. But when I pass window, as window is not present, it is showing you the exception, runtime error. Java.lang, illegal argument. Okay, so it is showing you no enum constant is found. Okay, because Windows is not present, so it is showing you illegal argument exception. Any doubt in this program? No, sir. Next example. Enum operating system, Windows, Unix, Linux, Macintosh. Now I am creating a object of Enum operating system OS, then operating system dot Windows. So I pass operating system dot Windows. Now Windows is match here. So after it is match, it is showing you your operating system is Windows. The value is match. Okay, तो यहाँ पर जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं यहाँ पर मैच हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज. So it's showing you your operating system is Windows. Any doubt? କିଛି doubt ଅଛି ଏ program ଭିତରେ? No, sir.
So next example. See that here enum is present inside the class. See the difference. When enum is present outside of the class, there is no semicolon. But here enum is present inside the class, then here I use semicolon. Same program, operating system OS, operating system dot Windows. If your value is math, then it is showing your operating system is Windows. Only the way of declaration is different, then other thing is same. It is showing you your operating system is Windows. Just a minute, I just send the code. So I show you another program, then I will check. Last program of Enum. Another two program is present.
Enum operating system. So every element is having some kind of index number. Windows 1, Unix 2, Linux 3, Macintosh 4. Now here I define a variable private int value. So enum, as enum is a class type, so here enum constructor is defined, and here it is defined as a parameter. So in this parameter, when you are calling the enum, this value is initialized 1, 2, 3, and it is initialized in the value method. Now what happen in the main method, when I create a object of enum, ओके यहाँ पर मैं enum का ऑब्जेक्ट बनाया, जब ऑब्जेक्ट बनाया enum का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा enum का वैल्यू जो 1 2 3 इनिशियलाइजेशन होगा. ओके जब मैं s प्रिंट करूंगा, ओके सो इट इज शोइंग यू विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, मैकिन्टॉश. व्हेन आई राइट हियर s dot value, it is printing, it is called this value 1 2 3 4. Okay, value means these values are stored in the variable. Now see that what is the output. Windows 1, Unix 2, Linux 3. When you write only AS means it is printing you this value. When you write AS dot value, it is showing you this variable value. Understood? बुझिएला program? Or any doubt? Reply करो. सर प्राइवेट आईएनटी को केवल वैल्यू ପାଇଁ यूज करा ହେଇଛି. खाली वैल्यू ପାଇଁ एटा यूज कराला. माने जो इंटीजर वैल्यू में पास करले enum रे ताकू कॉल करिया ପାଇଁ एटा यूज कराला. Next program, enum switch case.
class enum 5, then enum Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Now I create a object of enum day, date or Thursday, so I call here Thursday. Okay, then I make this day object in a switch case statement, and I pass the value Thursday. Now it is matched with the case statement, so it is not matched with Sunday, it is not matched with the Monday, so it is showing you the default date is other day. Now check. Hmm. Hmm. It is showing you other day. If I pass any value like Sunday, now check the output. Just hold on. Now see that it is showing you Sunday here. Okay.
these are all about your enum. The next concept is your abstract class. The abstract class is what? Abstract class is called as the incomplete class which contain the abstract method. Abstract class is a incomplete class which contain the abstract method, and in abstract method we define the abstract access specifier. The abstract class is declared as a abstract access specifier. It may or may not include the abstract method. Abstract method is a incomplete method which is only contain the function. Okay, the abstract method is a incomplete method which is contain only the function, and that function is not having any kind of body. Abstract class is a incomplete class which contain the abstract method. Abstract method is a incomplete method which doesn't contain any method body. Okay, तो जैसे कि हम सभी मेथड का एक मेथड का बॉडी रहता है, तो abstract मेथड का कोई बॉडी नहीं है. So normally when you define a function, the function contain the method body. But if you define a function as abstract void display. Okay, this is abstract function. Means the method is only declared, but it is not having any kind of implementation, or it is not having any kind of body. For defining this abstract method, we require a abstract class. So before defining a class, we define an abstract keyword. Abstract class name is my class. That is abstract class. Okay, अगर आपको abstract method को define करना है, तो आपको class को abstract बनाना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका abstract method. It doesn't mean the abstract class is only contain the abstract method. It also contain the complete function or complete method. Suppose if you want to define a complete function, then also it is working. The complete function. But abstract method is only that method which contain which is only declared, but it is not implemented. It is not implemented. So where it is implemented? तो कहाँ पर ये फंक्शन को आप यूज कर सकते हो? ये फंक्शन यूज होता है डिराइव क्लास में. सपोज चाइल्ड extends from my class.
So in the child class, you can implement this function. Okay, so it is implement the function. So abstract function is a type of function which is only declare और which is only used in the derived class. सिर्फ derived class में use होगा, derived class में use होगा. Okay, और ये सब declare होगा. Abstract function is only declare. It is not having any body. ये क्यों use होता है? Suppose if I give you a container, suppose I give you a paper glass. So in that glass you can take the water, you can take the milk. Okay, so that is depend upon you how you have to use. The abstract function is that type of function where I have to give a container, means I am given a container, so that container you have to use based upon your need. So that is called as your abstract method. It is a method which is giving a prototype to you. It is giving a prototype and you have to use that function in your way. Abstract class cannot be instantiated. It means you cannot create a object of abstract class. आप abstract class का object नहीं बना सकते हो. तो abstract class का जो functionality है वो derived class का object के through में call होगा. Okay, क्योंकि abstract class का object आप नहीं बना सकते हो. So these are the work of your abstract class. Okay, so in next class I will give you the notes as well as the programmatically how it is implemented. Okay, so tomorrow I will meet same time.